Hello students. So in my last video, I left you with some of the questions. I don't know how many of you, only few students have answered that. I don't know how many of you are following the videos. Okay. If you're following, then it's good. If you're not following, then also it's good. What can I do? So as I left you with some questions, so today in this video I will answer only those questions because the chapter is already over. Okay. So let's see what were the questions. The first question was, why do we get hurt when we beat our hand on a solid surface? So the reason behind it is that when we beat our hand on a solid surface, okay, we apply some force. How much force are we applying? Actually, while beating, we don't know it because we move our hand so fast, and as we know that the force is completely depending upon the mass and an acceleration. So your hand's acceleration is too much and mass is also there. So because of that, when you move your hand faster, okay, in that case you are applying more force. When you move your hand slower, in that case you are applying less force. So let us consider you are moving your hand faster. Okay, so in that case what will happen? Due to that velocity and mass, you will apply a huge amount of force on the wall. Okay, and on reaction what will happen? The wall will apply the same force on your hand. Now the force which you had applied on the wall, that force is equally coming back to your hand, and now in your hand is not able to withstand that force. If your hand is soft, okay, it's not so strong, then it will not be able to withstand huge amount of force. Okay, so few things which I saw on some of the students answer, that the timing, you know, the time period is very less when we apply force on the wall. Look, time period doesn't matter so much. Here the question was about action and reaction. I think you would have googled it and you found that answer. So, but what will be the proper answer? The proper answer will come from the action and reaction only. Okay, when you are beating your hand on wall and you're moving your hand faster, in that case you're applying too much of force. Okay, and in reverse, the reaction force comes into your hand, which your hand is not able to withstand with, है ना? So that is the reason you get hurt. जब आप दीवार पर जोर से पटकते हो तो आप कितना फोर्स लगा रहे हो आपको पता भी नहीं है, बिकॉज योर हैंड इज मूविंग फास्टर. मास और वेलोसिटी पर आपका हैंड का फोर्स डिपेंड करता है, और उस फोर्स को आपका हाथ बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं ये तो आपको पता ही नहीं है. जब आप अपना हाथ जोर से दीवार पर पटकते हो तो वही फोर्स वापस आपके हाथों पर आता है, और आपका हाथ उस फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता है. बर्दाश्त नहीं कर पाता तो आपको चोट लगती है. ठीक है, जब आप धीरे से हाथ को ला करके दीवार पर पटकते हो उस समय फोर्स कम लगता है, उस फोर्स को आपका हाथ बर्दाश्त कर सकता है, इसी कारण से आपको चोट कम लगती है. ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल था एक्शन और रिएक्शन का, जो आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे, बस इसी के अकॉर्डिंग आंसर करना था. ठीक है, यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में बच्चा वॉल के ऊपर लगाता है धक्का और सेम फोर्स उसको पीछे धकेल रहा है. ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, दीवार के अंदर कुछ वैसा पावर नहीं है कि वो किसी को फोर्स लगाएगा, ये उसी फोर्स को वापस कर देता है जो आप लगा रहे हो. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड opposite reaction. The second question was, how can a horse pull the cart if both are applying same force on each other? एक हॉर्स और कार्ट का केस, जहाँ पर हॉर्स कार्ट को कैसे खींच रहा है, सेकंड क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इसके आंसर को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ओवर देयर. कौन कौन से फोर्स हैं, क्या सिर्फ एक्शन और रिएक्शन फोर्स है या बाकी भी फोर्स हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं. ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर बाकी और भी काफ़ी फोर्सेस काम कर रहे हैं. सबसे पहले तो आप पोजीशन देखिए कार्ट का और हॉर्स का. हॉर्स और कार्ट सीधे खंभे से बंधे हुए हैं, मतलब हॉर्स अगर अपने पीठ से
फोर्स लगाएगा कार्ट पर, तो कार्ट जितना फोर्स लगाएगा हॉर्स पर वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टायर के नीचे फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्राउंड का ग्रेविटेशनल फोर्स है और रिएक्शन फोर्स है। तो ये सारे फोर्सेस यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब इन सारे फोर्सेस में हॉर्स कैसे इस फोर्स को ओवरकम कर पाता है और कार्ट को आगे बढ़ा पाता है। तो कार्ट को आगे बढ़ाने के लिए हॉर्स क्या करता है, खुद को आगे की तरफ बेंट करके अपने पैरों से जोर का फोर्स लगाता है और ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलता है। ठीक है, द हॉर्स पुशिंग बैकवर्ड दी सरफेस, ये सरफेस के पीछे की ओर धक्का लगा रहा है, रेड एरो जो दिखा रहा है आपको। और इसके रिएक्शन में क्या होता है, द सरफेस पुशिंग द हॉर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसके रिएक्शन में सरफेस हॉर्स को आगे की ओर धक्का लगाता है। ठीक है, और ये जो आगे की ओर धक्का है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है इसके टायर के नीचे, व्हील के नीचे, उस फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होता है और इसी के कारण हॉर्स आगे बढ़ पाता है। ठीक है, द रीज़न बिहाइंड इट, how the horse is able to pull the cart. Horse bends itself in forward direction and then applies the force with the help of its feet on the ground, and in reaction ground pushes the horse and cart in forward direction. That is how the horse is able to pull the cart. Okay, so it was the answer of your second question. Then the third question was on collision of a car and a truck, why does the car gets damaged more? कार और ट्रक के कोलिजन में कार को ज़्यादा नुकसान क्यों पहुंचता है। यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ट्रक और कार है, कार में ज़्यादा नुकसान पहुंचा और ट्रक में नहीं। इसके पीछे की रीज़न क्या है? सो द रीज़न इज मास, ओके, एंड द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू विथस्टैंड with the force which is acting on the body. So every material has different ability to withstand the force. When a car and a truck collides with each other, okay, in that case momentum gets conserved, equal force is being applied on both the objects, है ना? In the force which is applied on the car, the same force is being applied on the truck. But here one thing which is very important comes, the material. Which material is being used there? What is the mass of the object? If the mass of the object is high, then it will be able to withstand with the high forces, and if the mass of the object will be less, then it will be able to withstand with the less amount of force. So as a car's weight, the mass is very less as compared to the truck. That's why it is not able to withstand the force which is applied on it by the truck. Okay, whereas the truck's mass is more than the car, enough. So now the truck is able to withstand the force which is applied on it by the car. That's why the car gets damaged more than the truck. Okay, so it completely depends upon the ability to withstand with the force. Okay, action and reaction both are same here, but how does it get damaged? Just because of the ability to withstand with the force, कि वो कितनी फोर्स को, कितना बल को बर्दाश्त कर सकता है। अगर ज़्यादा फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और अगर ज़्यादा फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो इसको नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो इसी कारण से कार डैमेज हो जाता है मगर ट्रक ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। क्वेश्चन एक बार इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते समय मैंने ये भी क्वेश्चन करा था कि जब मोमेंटम कंजर्व्ड है, बोथ आर अप्लाइंग सेम फोर्स ऑन ईच अदर, इन दैट केस how is it, why does it happens that after collision car moves back, है ना, but the truck remains at its place. टक्कर के बाद कार पीछे की तरफ मूव कर जाता है मगर ट्रक अपनी जगह पे रह जाता है। इसके पीछे भी रीजन सिर्फ और सिर्फ मास है। मास के कारण इनर्शिया होती है।
The object which will have more mass will have more inertia, and the object which will have less mass will have less inertia. As the inertia of the heavier object is more, that's why it remains on its place, whereas the inertia of the lighter object is less, that's why it moves backward or in some other direction. Okay, so the inertia is also a reason behind that question. So आप देखो, एक जगह पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स काम कर रहे होते हैं. जब भी हम लोग किसी के सामने कोई क्वेश्चन आता है हमारे डेली लाइफ में, it is happening all around us. It is upon us that how much do you want to observe it. Look at the things and try to understand why those things are happening. Whatever you have studied, just apply those laws over there. And now see that will you be able to answer the things which are happening around you. If you are not able to answer, then go through the concept and read it again and try to understand that concept again. Okay. ये car, truck, horse and cart, your hand, all those were the very practical examples. That's why I gave you all those questions, because that is happening all around you. You see that almost every day in your life, but you don't observe that. Why is it happening? You read the law, but you didn't answer the question. Then what is the need? Why have you studied that? If you are studying anything, then you should be able to answer the questions related to that chapter, right? Or those laws. So before finishing this chapter, I'll ask one more question. That we know that the action and reaction forces are same. Okay. Then when we leave a stone from roof of a house or top of a house, then it falls towards the ground. If action and reaction forces are equal, then why not that stone pulls the earth towards it? अगर आप किसी घर की छत से कोई पत्थर नीचे फेंक रहे हो और एक्शन और रिएक्शन सेम है, तो अर्थ ही उस पत्थर को क्यों खींचता है? वो पत्थर उस अर्थ को क्यों नहीं खींच लेता है? इसके पीछे का भी रीजन है मास. द मास इज वेरी मच, है ना. अर्थ मास इज अर्थ मास इज we can say that कई ज़्यादा गुना बड़ा. It has not one time, not two times. It is lot bigger than the size of a stone. So the mass is the main factor that stone is not able to pull the earth. If both the objects will be on same mass, in that case it may happen that both the objects will not move, because both will apply the same force on each other with the same mass. But here the mass of earth is so much, so it has inertia. It restrains its position, whereas the mass of a stone is very less as compared to the earth, so it has less inertia. So as it has less inertia, so it will move, and it will move towards the earth. Okay. So what we see, the Newton's third law, we have seen that forces always occur in pair. Okay. That was the final conclusion of this chapter, that whenever a force acts, it acts in a pair. If action is there, reaction is also there. If gravitational pull is there, then it's reaction force, which is normal towards opposite to the gravitational force, is also there. Okay. So forces always occurs in pair. That is the final conclusion of the
third law of motion. Okay, so here now I am ending this chapter. This chapter is already finished. Now your work starts. Do all the question, show it to me. Okay, I don't know how many of you will follow the video, how many of you will show the answers. Okay, but I am expecting from every one of you. So do it. I'll give you few days more to finish this chapter, and then we'll move to the third chapter of physics, which is gravitation. Okay, so till then, good luck. Bye.